मुझे अनसपोर्टेड ब्राउजर आ रहा है स्ट्रीम iOS एप्लीकेशन Yes, we are live now. Welcome to the Save Indian Family Foundation media channel. So today we are going to discuss related to the elections which are going on in India. So we are going to talk about that what is the agenda political parties are putting in the society and how they are fooling the society and what are the other things are going through. So we also going to discuss related to that, can we have a political party for men's movement? So here with us today, Save Indian Family Foundation co-founder Anil Murthy is with us. So he will enlighten us Hi. that what is the agenda Hello. is going on. So we will Hi. discuss Hi. further on that topic. So be with us, like, subscribe our channel, and be with us to get to know about that how the society going on. Anil sir, please. Yeah, so it's almost midway is over, right? I mean, more than half of the elections, I think around plus 300 plus seats, elections are over. So all Correct. kinds of speculations are going on. So some are saying BJP will get a lot of seats and maybe more than 350 or maybe almost 400 seats. Then there are also other claims that BJP may not get such a huge majority. It may lose and it may get around 300 or 310 seats. So let's see what happens. But the point is, none of the political parties are talking about, the fundamental things like false cases, so many false cases, family breaking, children being abused, and there's a lot of gender war that is going on. So they are in fact trying to appease women. They are trying to bribe women. So by this election, what they have done is they have effectively divided people as men and women. Earlier they played caste politics, religion politics. Now it is the gender politics. So this is the first time we have full-fledged gender politics and freebies that have come up. This was not so in 2019 or 2014. This was not a prominent issue. So going forward from this election and then the next one in 2029, let's say that's when it is. Uh, there will be more rhetoric around gender, women. So they have to politicians will then invent issues of women. So even if women do not have an issue, the politicians have to invent them, right? That is how the BJP will Correct. do Nari Shakti, the Congress party will do freebies and Nyay, that is the justice for women and all that nonsense. They will start doing, and none of the parties will talk about the grave issue of family breaking and uh, Correct. and the children are suffering, senior citizens are suffering, and people are running around courts for 7 8 years if there is a marital problem, and nobody is going to talk about like false cases of rape or false cases of sexual harassment and false me too cases, and also about judicial reform. See, none of the parties are saying like if you have a court case going on, they all will be like 2 years or 1 year we will solve the cases. Nobody is talking about judicial reform policy. So that's where we Correct. are as far as this election is concerned. So we'll Hmm. see what all, how we can play a role, because we can't trust these political parties to do anything. So that's where we have to see if we need a political party or we need to have independent candidates. So that's how we have to discuss. Correct. Right. Yeah. Right. Right. So we want our people, our viewers who are watching this live session, we need, wants your reviewer that do we really need a political party for a men's movement? That whatever the issues are going on, and no political party is talking about the men's issues, the false cases, and in a judiciary, since 5 crore cases are pending and no one is ready to talk about it. Only Supreme Court is going to create many of the honorable courts and wants to appoint many of the lawyers and the judges. But what about the people who are going through it? What about the families? What about the child, the parental alienation which is going through it?
no one is ready to talk about the shared parenting. No political party is discussing about it. Even though there are a woman empowerment, a Nari Shakti is going on, but still why the maintenance cases are there, why the maintenance cases are not getting scrapped when government is providing these many schemes. So everyone is aware about it, and sooner or later in this discussion we will talk about that, how the political party are talking about this Nari Shakti, the movement the BJP is giving, the Congress is giving, the AAP is giving. So we will discuss about it. So be with us and continue and like and subscribe this channel. So, Samirji, can you enlighten us? See, we are into a great big war currently, wherein the political parties have become our enemies. They are fueling the enemy in form of freebies given to the women who are misusing those weapons. So we have to take care of these political parties so that they do not fuel these enemies. Okay, so this is the biggest issues which we are facing now. Political parties are misusing our tax money, and and they are into the big businesses, political businesses. So we have to tackle about that. Right. Correct. Shashank, Very good evening, Virag bhai. By the जो way, Sasank, situations before हमारी you go, I am taking a look at questions. I am taking a look at questions. Okay, the people's comments. I am taking a look at people's comments. Yeah, please Okay. continue. yeah, Yeah. so yes, actually जो हमारा सिचुएशंस है मेंस राइट्स का, वो हमारे इश्यूज बहुत सिंपल हैं। और आई थिंक कि हमारे अनिल सर बहुत पहले पार्लियामेंट में ये सारे इश्यूज पर्सनली उठा भी चुके हैं। और पॉलिटिकल पार्टी से अगर बात की जाए कि ये प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फॉल्स केसेस और वुमेन सेंट्रिक लॉज, तो उन्हें सारी चीज़ें पता है। हम लोगों ने कई बार ऐसा देखा है, कैंपेन हम लोगों ने राष्ट्रपति के पास लेटर्स भेजे हैं, प्रधानमंत्री के पास भेजे हैं, अभी रिसेंटली राहुल गांधी के पास भी कई सारे लेटर्स गए हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी को ये सारा चीज़ पता है, लेकिन वो मेंस मूवमेंट को हमेशा इग्नोर करते हैं। रीज़न हमें भी नहीं समझ में आता, क्योंकि रीज़न चूँकि यहाँ पे बताया जाता है कि वुमेन्स का जो रिजर्वेशन कोटा है या जो वोट बैंक है वो 50% है। तो 50% में तो हम लोग मेंस भी आते हैं। तो जब मेंस आते हैं तो उनके लिए कोई तो सोचने वाला होना चाहिए ना। तो वो हमारे पास कोई भी पार्टी नहीं है जो मेंस के लिए कुछ भी सपोर्ट करता है। तो मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली एक मेंस राइट्स के लिए पार्टी होनी चाहिए, जो मर्दों के बेनिफिट में बात करे, मेंस का रिजर्वेशन के पे भी बात किया जाए। और तो और हमारे जो फॉल्स केसेस और जुडिशरी जो बिल्कुल बायस्ड है, सोसाइटी बायस्ड है, उस ओर भी इक्वालिटी की ओर हमें मेंस को पहुंचाया जाए। ये वुमेन सेंट्रिक जो सिस्टम बनते जा रहा है, उसको चेंज होना चाहिए। इसके लिए एक पार्टी की जरूरत है, और 100% हमें एक मेंस इशू की बात करने वाली एक पार्टी की रिक्वायरमेंट है। जी विराग भाई, कैरी फॉरवर्ड। Yeah. So I think yeah. So correct. before Virat comes, I think see, I myself, I'll just share with you that I went to Election Commission office. At that time, it was in Ashoka Road in Delhi in 2009. With a with and I basically found out how to make manifestos and how to prepare all those things that are needed. And in 2009, we had campaigned for a during Lok Sabha election. We campaigned for a men's rights candidate. His name is Sudhir Anand. Unfortunately, he had passed away many years back. So Sudhir Anand was the candidate from South Delhi constituency. So he stood for men's rights, for against false cases, and at that time there were a lot of NGOs together. So I was in Delhi for around 20 days with another activist from Bangalore. We stayed there to campaign.
all those days, and he fought against Makan, Ajay Makan. I think he Hmm. was a sports minister of Congress or something like that. So we used to Hmm. campaign in all those streets of Delhi, and we went to many meetings or resident welfare associations. And the symbol that we had got at that time was blackboard. Okay, so during that time we considered if we can have a political party of our own, so that we create we have a plan and we contest in elections, mainly to disrupt. Whether we win it or not, that's a separate thing that will take time. The other thing was like there was also a political party in UK called Justice for Men and Boys. So that party candidates were contesting elections, so that was also an inspiration for us. So later on, of course, we put candidates, independent candidates during assembly elections in Karnataka and also Delhi assembly elections. So we have got all the experience related to the political campaign. So if the Hmm. viewers right now who are online, if they have any questions related to uh, what all are involved, what are the critical things one has to take care while contesting in election, or funds and audits and income asset affidavits, and how do you fill up the form, qualifications, and all those things, details. If they ask questions, we can answer also as we discuss this topic. Yeah, Virag. Yeah, so that's a very good point, and we have seen that Save Indian Family Foundation has taken an initiative in the political parties in the starting phase, and also created some of the events, just like a hunger strike was there, and the recently in the last year the international conference on men's issues in India was happened in Pune, and we also protested regarding this. Schemes which are coming for a woman, which is like underwear burning protest for voting for a nota. So there are many things which Save Indian Family is continuously doing, but the thing is that why the society is sleeping, why the society is not talking about it, why the society is not ready to come forward to ask these questions to the political parties when a person is coming to you to asking for a vote, when they are giving you a freebies or giving you some kind of a lollipop. Why you are not asking these questions? Why you are not asking that what will happen to your children's, what will happen to your parents if these cases, if these laws are not getting modified, not getting amended, and no one ready to take an initiative on that part? Sooner or later we will not be able to help many people if such kind of things will keep on and you remain silent. So we want you guys, please share your comments that do you really want this society need an awareness? The society needs to ask these questions to the political parties. That's why we are here to talk about it. Right, Anil sir? Yeah, yeah, exactly. So so let's Correct. see comments what they are saying. Hmm. Yeah, there is one comment from Can a I get person. a chance to today? Yeah. Yeah. So there is a comment Okay. like the only reason false cases are filed in such a huge Right. numbers is because there is no punishment to the complainant, and so they are not afraid to file false cases. And this is very right thing which this person has told, because there is no punishment if a person is filed a false case and after that that case the accused got an acquittal. But what will is going to happen to the person who is filing the false cases? The years, the months are going wasted in the courts, getting rounded there on every date. Just you have to appear, just you have to discuss, but at last what that accused will get? There are a person which I think most of the people have known about it, Dilli ka Darinda. His 5 years got wasted, and Save Indian Family Foundation was there to stand with him, to take a part with him, to help him out, to come out from that. But in a media, in a all the media trial, he is still a Dilli ka Darinda. And similarly, one person who spent it a 20 years for a false rape case, after that he came out, his two generation is gone. Who is asking these questions? Why we are remaining silent? सी विराग भाई, ऐसा है कि Yeah. जो जुडिशरी, जो हमारा आईपीसी सिस्टम है, वो फॉल्स केसेस के लिए ऑलरेडी पनिशमेंट का एक्ट अवेलेबल है,
पर अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जब ये एक तो आप आईपीसी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, और जब इम्प्लीमेंट किया भी जाता है तो वहाँ पे बात आ जाती है कि वुमेन ने फॉल्स केस पुश किया है, तो उसको फॉरगो करने का जुडिशरी को आदत है। मतलब वो उसको क्राइम नहीं मानते, खासकर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में अगर वो कोई फॉल्स केसेस फाइल हुए हैं तो वो क्राइम के रूप में नहीं काउंट किए जाते, जबकि ये होना चाहिए। और अगर वही चीज़ जेंट्स करता है तो वो एक क्राइम के रूप में काउंट होता है। वो आपको इतना प्रेशराइज करेंगे कि किसी तरह आप केस अपना रिमूव कर लो, किसी तरह सेटलमेंट कर लो, क्योंकि ये अल्टीमेटली उन्हें पता है कि अगर ये मुद्दा पहुंचता है जुडिशरी के एंड में तो वहां पे उनको फॉल्स अक्यूजर को पनिशमेंट देना होता है। तो आप 211 ले लो आईपीसी या 193, 195, सारे चीजें अवेलेबल है, पर हार्डली इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो जुडिशरी से अगर आप कानून मंत्री से अगर ये सवाल पूछोगे तो वो बोलते हैं कि हमारे आईपीसी में फॉल्स केसेस के लिए पनिशमेंट ऑलरेडी फिक्स्ड है, बट कुछ होता नहीं जुडिशरी में, ये फैक्ट है। तो ये कौन क्रिएट करेगा, कौन इस टॉपिक पे बात करेगा कि जुडिशरी में भी ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, ये हमें कभी लाइट नहीं आया। और अनिल सर से जितना हमें हम लोगों को समझ में आया है कि अनिल सर भी यही चीज़ बोलते हैं कि जुडिशरी बिल्कुल वुमेन की तरफ से सोचती है, आपकी तरफ से कुछ सोचती नहीं है। तो फैक्ट है ये कि हमारा सोसाइटी, हमारा लॉज, हमारे कानून, हमारे पॉलिटिकल पार्टी सारे वुमेन सेंट्रिक हैं। सोसाइटी तो कुछ भी नहीं रहा, तो पेट्रियार्कल सोसाइटी नाम का हमारे पास जो ठप्पा लगाया जाता है वो अब हटा दिया जाना चाहिए। बहुत सही बोला आपने शशांक जी। बट बात यह है कि जुडिशरी में एक उनको एक बुक मिलती है जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक आईपीसी दी जाती है, एक सीआरपीसी दी जाती है। बट हु आर द पर्सन हु डिसाइड दैट? बट दोज आर द पर्सन, द पॉलिटिकल पार्टीज, द एमपीज, द एमएलएs which are sitting in a Lok Sabha, which are chosen by the people for the people. But what they are doing, they are not raising this question. Even OVC has raised a question regarding a male suicide and the things which are happening on a man. And Anubhav Mohanty has talked about the parental alienation, the child separation. But why their voices are not being heard? Why these become silent? Uh, Why media is not covering it? So we have to, Viraj yes, Yeah, Hardik. so I think uh, can I speak something here, guys? yeah, please go, Can I please go. Yes, speak sir. something? Yes. Please, Yeah, please. so people are already engaging with a lot of points. So one person asked, what can be the part of the manifesto? Okay. So just Hmm. remember, this is an important question that we have to answer. And see, before we go there, we have to understand that they are what will be the main points of the manifesto. Please give some indications. This is a great question, actually. Yeah. See, before we go there, हमें ये देखना है, हिंदी में मैं बोलता हूँ, then we will speak again in English. हमें ये देखना है कि जनरली हम जब इंटरनेट में रहते हैं, ट्वीट करते हैं या कुछ लिखते हैं, तो पीपल जनरली हमें बोलते हैं कि ये फ्रिंज है, एक कोने में बैठे हैं, फ्रिंज है, राइट? लेकिन आप जब जमीन पे आते हो एंड आप कैंपेन करते हो, जमीन पे लोगों से मिलते हो, पार्क में लोगों से मिलते हो, सिर्फ मेंस राइट्स की इश्यू नहीं है, जुडिशियल रिफॉर्म तो सभी को चाहिए। किसी की प्रॉपर्टी की केस है, किसी को और कोई केस है, केसेस तो सभी के पास कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, राइट? जुडिशियल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, ये सभी की जरूरत है। तो ये जो है ना, हमें ग्राउंड में लोगों से मिलना है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, सिर्फ इलेक्शन के टाइम के नहीं है। उससे क्या है कि लोगों को पता चलेगा कि हम हैं कौन। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मेंस ह्यूमन राइट्स, व्हाट आर वी? यू नो आर वी लाइक, जो हिलरी क्लिंटन बोल रही थी ना 2016 की इलेक्शन में, बेसमेंट ड्वेलर्स। सो दीज पीपल आर ट्वीटिंग फ्रॉम देयर मदर्स बेसमेंट। ठीक है, क्या हम बेसमेंट ड्वेलर है या क्या हम बास्केट ऑफ डिप्लोरेबल्स हैं? हम हैं कौन? हम कहाँ, कौन से यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड है, या Students क्या हैं. हमारी, क्या, कौन है हम? पीपल नीड टू सी द फेस रादर देन सम थिंग्स बीइंग ऑल राइट का जो अमेरिका में हुआ था।
इस तरीके का एक इमेज का भी प्रॉब्लम हो सकता है. So इसीलिए we have to not only protest as men's human rights on the ground, we have to also have a political presence, and we'll talk about a dozen issues, not just only men's rights or false cases, right? So what can be part of our manifesto? Okay, see, understand, हमें हमें पहले देखना है कि ये ढांचे में ट्विस्ट कहाँ पे है, बिकॉज द होल थिंग इज ट्विस्टेड. अभी जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स है वो ट्विस्टेड चल रहा है. एक विकास की एक नैरेटिव है, विकास वाला नैरेटिव. एक नैरेटिव है पाकिस्तान, चाइना एंड ऑल दैट, दैट इज वन मोर नैरेटिव. देन द थर्ड नैरेटिव इज हिंदू मुस्लिम और रिलीजियस नैरेटिव. इस तरीके का तीन चार नैरेटिव चल रहा है, और फिर हम पैसा सबको बांट देंगे, so these are like 3-4 narratives. Can we disrupt their narratives? Okay, can we, मतलब हम इनके इनके नीचे से जमीन हम मतलब खींच सकते हैं क्या? Can we pull the carpet below their feet? Okay, so that is what matters. For example, ट्रैफिक में सेफ्टी में अभी भी हजार प्रॉब्लम है. फुटपाथ नहीं है शहरों में ठीक ठाक. फुटपाथ के ऊपर चलते रहो तो एक होल हो जाएगा, आप गिर जाओगे, राइट? दैट इज रियलिटी. ओके, पॉट होल्स जैसा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है इन लोगों से, ठीक है? और ऐसे बहुत स्टेट है जहां पे स्वच्छ भारत तो पहुंचा ही नहीं है, पूरा नाले नाले भरे पड़े हैं. एट दैट जुडिशियल, सीनियर सिटीजन की क्या अधिकार है? सीनियर सिटीजन का कोई मोबिलिटी नहीं है. इफ यू आर ए सीनियर सिटीजन इन पुणे, बैंगलोर और दिल्ली, आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते हो भाई. घर के बाहर आ गए, आप 100 मीटर नहीं जा सकते हो, ठीक है? आप जो फी देने की बात कर रहे हो भाई, एक फ्री ई रिक्शा तो चला दो, सीनियर सिटीजन के लिए 5-6 ई रिक्शा एक लोकल है मंदिर के तक चला जाए. ही शुड बी एबल टू गो टू ए टेम्पल और ए community center or a library. By the way, I'll tell you one thing. All the senior citizen library and community centers in cities like Bangalore are closed. They've just taken over those things and they did something else. So senior citizen Correct. cannot go to a community center. Okay. See, there has to be a library, community library, senior citizen library. Senior citizen, where they're like घर के अंदर बैठे हुए हैं. They have no interaction at all. They are bored to hell. ओके, मतलब सिर्फ पार्क थोड़े बहुत है इधर उधर, बट वो लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर जो बनना चाहिए, अरे भाई 1000 स्क्वायर फीट का तो बनाओ. 2000 जो था ना उसको भी उड़ा दिए हैं, राइट? सो टॉक अबाउट सीनियर सिटीजन हु आर लाइक अ वल्नरेबल क्लास. उनके हेल्थ केयर नीड्स जो है उसमें दो ना, जो भी फ्री देना है दे दो. Then what about children? So many street children, so many children are facing abuse, so many children are getting abandoned. Okay, it's not just children of divorced parents, but there are so many children who have no voting rights. ठीक है, उनके लिए जो हेल्पलाइंस है वो कितनी रिलायबली काम करते हैं? लेट्स ट्राई. एक बच्चे के बारे में रिपोर्ट करो, ओके, इन ए हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, एंड जस्ट सी व्हाट हैपेंस. हाउ मेनी आर पिकिंग अप, व्हाट एक्शन इज बीइंग टेकन. क्या सभी काम एनजीओ ही करेंगे क्या? मतलब देयर आर सो मच ऑफ अकाउंटेबिलिटी दैट वी हैव टू ब्रिंग इट, राइट? सिमिलरली देयर इज सो मच ऑफ फेक न्यूज एंड मिस इन्फॉर्मेशन जा रहा है, उसके बारे में कुछ हो नहीं रहा है. एंड लेट्स नाउ कम टू इंपॉर्टेंट थिंग लाइक जुडिशियल रिफॉर्म. सी, जुडिशियल रिफॉर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है. ओके, अभी अभी आई एम गेटिंग द न्यूज दैट चैट जीपीटी, व्हाट इज दैट, 4o has been published, right? Guys, can you see me, Samir? Can you hear? Yeah, we can see Or see you. or yeah. So Chat GPT 4o, I think 4.0 or whatever has come up. It has lot of features, right? तो जुडिशियरी की बहुत सारे जजमेंट की जो प्रोसेसिंग है, उसकी जो डेटा प्रोसेसिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, देयर आर टू पार्टीज. सो उसका जो इंफॉर्मेशन होता है, डेटा होता है, उसको आप एंटर करो ना भाई, इट इज इजीली, इट कैन प्रोसेस ऑल द थिंग्स. ऐसे ऐसे गलत गलत जजमेंट सब पास करते हैं जज लोग. फॉर एग्जाम्पल, बच्चा नहीं है, मेंटेनेंस की जजमेंट में वाइफ एंड हस्बैंड की क्वारल चल रहा है, और मेंटेनेंस की जजमेंट में जज ने ऑर्डर दे दिया है जहां पे बोला बच्चे के लिए इतना मेंटेनेंस दे दो. अरे भाई, बच्चा है नहीं, देयर इज नो किड, but it is just a copy pasted judgment kind of a thing going on. And there are so many places where you need some kind of a AI or some structure to do the things. Otherwise, judges are like going from one end to another end, extreme, like they are more volatile than a stock market during election time.
look at other things like judiciary में perjury काम नहीं करता. People are blatantly lying under oath. Okay, blatantly, openly they're lying under oath, and you have no AI or no basic logical system to filter out कि this may be a inconsistency or something like that, right? Absolutely. वो क्या Hmm. manually verify करोगे? See, somebody has said something in an affidavit in year 2021. In 2022, they said something else. And in 2024, they are saying something completely opposite, right? Hmm. तो all these three things कोई manually बैठ के check करेगा, बैठ के ये कब क्या बोला था, it will be very time consuming. So all these facts can be entered into a simple software based system, and then you can solve it, right? So this is the big thing there. And then see, constitution itself, there is nobody is discussing about constitution. Okay, like article 15, nobody is discussing about it. Police reforms are like, police is behaving like a mafia in North India. All these false rape cases, Hmm. police is colluding, police is joining with them and taking some 20% commission. Okay, in the crime against women cells, they are not trying to protect women who really need to be protected. Instead, they are doing mandwali settlements between false accusers and the false case victims. So completely everything has become chaotic. So police reform, judicial reform are very, very important thing. Apart from vikas and religious harmony and poor people and all that, right? So these are key issues. No political party is talking about. Similarly, healthcare for old people, healthcare for children, mental health. Just think how many political parties have spoken about mental health and let's say suicides. The issue of suicides. I mean, almost I think 160,000 people have committed suicide last year, right? 160,000 or 165,000 people have committed suicide. Nobody is talking about mental health during this election. Nobody is saying we will have a government insurance policy. So if you are paying a small premium like 500 or whatever rupees, you will get you know some 10 therapy sessions, counseling and therapy sessions. So mental Hmm. health is a Hmm. big issue. So there are so many topics that these political parties are not covering. And these top, for example, education. How many are talking about revolutionizing education or bringing down cost of education, bringing more online education or vocational education? कोई बात नहीं कर रहा है उसका. ओके, सिर्फ सब सुपरफिशियली बातें चल रहा है ऊपर ऊपर से, all kinds of rhetoric. So we can talk real issue. There's so many students are impacted by the education things. You may talk about job loss, job नहीं है and all, but education की तो बात करो. Then ये सब topics है, इतने सारे topics they are not covering. We will cover them. Yeah, let's see what other questions are there. I सर just Correct. want to input some एक point. बहुत इम्पोर्टेंट Yeah, क्वेश्चन मेरे Hardik, mind में Hardik, आया. Hardik, are you saying something? Yeah, या Yeah, Sasank. I was. या Yes, yes. Sorry, Sasank, for interruption and all the mates here. Actually, I just thank, first of all, I am in a position to, I should thank SIFF to give the platform where this kind of topics these are the main issues being discussed. Other places where we are able to see if we are talking about the political party or we are talking about any public platforms, we don't have any of the platforms man is being heard. So I am thankful for them, first of all, Bill, starting any discussions ahead of that. And thanks to the co-founder or Anil sir and Vakare sir or Katti sir, given us the best platform to us for the men to raise their voice at least to the media, to the public platform, and to the judiciary or government also, and society also. So thank you for that first. I'm just starting one or two points which Anil sir already highlighted. My concern was that we are talking about why the political parties are not highlighting men's issues basically. When we talk about political parties, they have a concerns about their majority vote bank, and if we are talking about the vote bank, they have a woman as a main minority com who can give us the best support
in any of the platform on they are giving that. So if we are talking about the manifesto which we are discussing now, Congress has given the political party women's empowerment as a woman empowerment. They are giving the 50% reservation in their manifesto that they will, if they are coming to any states or any countries power position, then they will give the 50% reservation to the women. So see, it's like not from now. It's happening from the years. And see, we and this establishment of laws are happening from the taxpayers' money, and we are the taxpayer of the society as a man. Mainly men's are going to that 90% as a law is established like that. So housewives are not going to contribute on the tax paying money. They are dependent on a man, and with that money they'll establish the law against the man, and that will be utilized for women empowerment. So the concern of mine is that if he wants to address these points, first of all, my personal point of view is that we should highlight to the taxpayers' money first of all, and we need to see that how we can deteriorate that thing that taxpayers' money will be not go to the direct government, or we are pressing the nota that will not help us out. We need to see that how the money is rotating out only the political party, and our money is not utilized by the parties who are only focusing on the women empowerment. We are just only here to see that we are not against the women empowerment, but the thing is that taxpayers' monies are not contribute to the actual development what Anil sir or other seniors has highlighted. So I have some points, but I'll just want to some of the Yeah, point I have highlighted here. I'll just put 2 points before Sasank comes up. Yes, See the whole thing is like why we are discussing this, because see, politics follows the law of jungle. Okay, it is correct, not correct, based on correct, any morals or any principles for any political party. It is law of jungle. It's all about how much strength you have, how much you can force, how much correct, you can snatch from each other. So it's a tug of war. So it's a tug of war between BJP, Aam Aadmi Party, and some other party like Trinamool and other parties, and then Congress and all these. So this is a tug of war. It's a brutal tug of war. So don't go into all that story of development and Hindutva and some diversity, Nyaya and all that. That is all bakwas. That is all the outer layer. The basic thing is it's all about force. So if we men's rights activists are getting into politics, want to get into politics, especially the younger guys who are in 20s, 20, 25, 28, 30, we have to be a force, okay, in the political equation, okay. Then the politicians are also very scared people compared to, let's say, judges are not that scared, or bureaucrats are not that scared, but politicians are scared, just like movie producers are scared people, people who are afraid. Similarly, actors, movie producers are actually fattu hote hain. They are very scared people. Similarly, politicians are also very much scared people. Why? Because they invest a lot of money and lot of effort for an election. If they lose an election, all that money and effort is gone, right? And then they may again wait for another 5 years. Same way, a movie industry, if a actor, actress not doing well, or a producer is bad, then the movie will be flop. They will lose a lot of money. That is how the whole equation is. So we have to create that fear. So in the political game, it is the fear that works. Okay, it's a fear, concern. Some kind of muscle flexing has to happen. Okay, we may be talking online, talking about marriage strike, nobody marrying, society getting destroyed. It's a real thing, and people should be careful about. People should be scared of it. People should take notice of that. But when we get into political system, as election candidates and all, that should that the aim is to create, intimidate these people. Now, what is needed to intimidate? Do you have to win elections like what Kejriwal did in Delhi and Punjab? If you have to win election, how many seats do you have to win? Okay, let's say, see, there are so many parties in India. They may not have so many seats. They may not be even ruling a state, but they are still a factor. They are still a factor in the elections, right?
It can happen. Like in Karnataka, JDS is now kind of a minor party, but it has a base. It has a base. So what matters is, can a political party have its own base? Can men's rights activists have their own base of, let's say, 4 5 crore people? Okay, or approximately, can we have a base? So can we get like 10% votes? Okay, 10% votes, 5 to 10% votes, can we get it? Because in an election, one party gets 40%, another party gets 35%, then some other party gets 5%, and another party gets 0.5%. So there are all kinds of equations there. It's not like every party is getting 20% or 25%. ऐसा नहीं होता है. Because India is a multi-party system, only two parties may get 35-40% like that, or maybe 25-30% like that. The rest of the parties get 5%, 2%, 1%. So can we perform better than all other parties? Like there are top two parties. Can we become a third party? Can we become a fourth party? That is what matters. In an election, our candidate, can he come in the third position? Can he come in the fourth position? Right? By 2029 or in the state assembly elections, if we can get to the third or fourth or fifth position, then we have a chance. And that can intimidate. Let's say we are getting 10 times more votes than Nota. Then the political parties will come running to us because they are losing the votes. So this is the equation. This is the force. That is what we have to count on. So we have to create a base based on issues. So before I forget, let me put this point. See, this current government and the previous government, they have continuously eroded senior citizen rights. That means senior citizen helplines are not working. If a senior citizen is getting abused by his children, wife, or whatever, he has absolutely nowhere to go. If a senior citizen is beaten and thrown out of the house, elderly person, by his own people, there's very less help available. Will he go to police station or court? Police is mafia. The courts are taking so much of time. The senior citizen, the structures to help the senior citizens act and senior citizens' body, they are being weakened so much. There is no accountability there. So just imagine the senior citizens vote itself, such a big, big base, right? Because we as men's activists are also, senior citizens' rights are also, aligned. They align with men's rights because we as men are responsible. We think about vulnerable, people in the society. If the senior citizens are vulnerable, we feel responsible to make a difference for them, right? So that is how we have to structure it and create a base. Senior citizens and young people, education, police reforms, judicial reforms, and more police accountability. Like currently, the political parties have completely weakened the Lokayukta and the human rights commissions. So the human rights commissions are only protecting the police, and the Lokayukta is also like completely useless nowadays. Lokpal जो है वो completely useless हो चुका है. So anyway, Sasak ji, so please take Yeah. over. Yeah. सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिसर्च सामने आया है सर, और बहुत सरप्राइज है कि बहुत कम लोगों का इस ओर ध्यान जा रहा है. फ्री बीज पे अभी हम लोग बहुत सारा टॉकिंग कर रहे हैं. अभी रिसेंटली हम लोगों ने अंडरवियर प्रोटेस्ट भी किया है. तो वुमेन्स को एक तरफ से फ्री रिजर्वेशन, फ्री कोटा, सब कुछ फ्री दिया जा रहा है, और सीनियर सिटीजन का जो फ्री कैपेबिलिटी था, पहले से चला आ रहा था, वो सब रिमूव किया जा रहा है. आप देखिए ट्रेन में पहले सीनियर सिटीजन कोटा दिया जाता था और कंसेशन दिया जाता था. ट्रेन में सडनली वो अब हटा दिया गया. तो अब आप सीनियर सिटीजन का जो कोटा है वो तो बहुत सारे ट्रेन में अवेलेबल ही नहीं है, और मतलब जो कंसेशन मिलता था वो भी नहीं है, और वुमेन्स का हर चीज में कंसेशन बढ़ाया जा रहा है. तो एक तरह से सीनियर सिटीजन को साइडलाइन किया जा रहा है, वुमेन को बढ़ाया जा रहा है. मतलब हर लेवल पे वुमेन को आगे किया जा रहा है और सीनियर सिटीजन मेंस को पीछे किया जा रहा है. तो ये अल्टीमेटली हमें लेके कहाँ जा रहा है सोसाइटी, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनका इस ओर क्यों नहीं ध्यान जा रहा. जहाँ पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट सीनियर सिटीजन को है वहाँ पे मिलता नहीं है.
जिसको कोई सपोर्ट का जरूरत नहीं है, वहां पे आप सपोर्ट पे सपोर्ट दिए जा रहे हो। तो ये पर्पस क्या है, ये पॉलिटिकल गेम क्या है सर, इस पे थोड़ा सा लाइट कीजिए सर। नहीं, दिस इज ए ऑसम पॉइंट एक्चुअली, दैट सीनियर सिटीजन्स के लिए जो ट्रेन में जो था उसको मतलब ब्रूटल तरीके से अभी गायब है वो। वेर एज नोबडी, कोई बात नहीं कर रहा है इसका। एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग। एंड देन बसेस में औरतों को फ्री दे रहे हो आप, और राहुल गांधी भी बोल नहीं रहा है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए वो क्या देगा। अरे भाई, दे दो ना, फिर से वापस दे दो 50% रिजर्वेशन ट्रेन में, दे दो सीनियर सिटीजन्स के लिए। राइट, समथिंग हैज टू बी डन, या सीनियर सिटीजन्स के लिए बोगी लगाओ, नहीं तो कोच लगाओ, वट एवर यू डू, वट एवर वे। उनके लिए मोबिलिटी का देखो, सीनियर सिटीजन के लिए बहुत प्रॉब्लम है। लाइक आई विल जस्ट टेल यू व्हाट हैपेंस। ट्रेन स्टेशन में सीनियर सिटीजन को ना ट्रेन बोर्ड करना ही डिफिकल्ट है। ट्रेन बोर्ड करने के लिए देयर आर अदर कंट्रीज लाइक चाइना एंड ऑल, वहां पे क्या होता है, चाइना एंड जापान एंड ऑल, तो सीनियर सिटीजन है बोगी में, तो दैट कंडक्टर विल गेट ए स्टैंड काइंड ऑफ ए थिंग, सो दैट वो स्टेयर केस जैसा बन जाएगा सीनियर सिटीजन आने जाने के लिए। यहाँ पे सीनियर सिटीजन को बोर्ड करवाना थोड़ा सा स्टेशन में इज ए चैलेंज, रियल चैलेंज। यहाँ पे मतलब पूरा इंसेंसिटिविटी है सीनियर सिटीजन्स और डिसेबल्ड चैलेंज लोगों के लिए। और ये बहुत ही इंसेंसिटिव लेवल पे हमारी डेमोक्रेसी चल रही है, राइट। एंड हर चीज में द पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशन हैज एवरीथिंग, but the political discourse is so pathetic, so bad. And here is the beautiful thing: the media is not questioning whether it is leftist media of scroll print, शेखर गुप्ता, राजदीप सरदेसाई, वो तो गधे हैं ही। इधर इधर राइट विंग का जो मीडिया है वो भी क्वेश्चन नहीं करता है। ओप इंडिया हुआ, या इधर ये जो भी जी हुआ, या जो भी है अभी, जो भी सब कॉर्पोरेट लोगों ने जो मीडिया लिया है, नोबडी इज टॉकिंग द एक्चुअल इश्यूज, सो एवरीबडी इज ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द कोर इश्यूज। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। अभी इंडिया में जितने भी फोन में स्कैम होते हैं ना, लोन का स्कैम, ये ऐप वाला स्कैम, चाइनीज स्कैम, ओटीपी स्कैम, फेडेक्स का कोरियर स्कैम, अरे कोई मतलब सो मेनी पीपल आर गेटिंग लूटेड, आई मीन वेल एजुकेटेड पीपल आर गेटिंग लूटेड बाय these स्कैमस्टर्स। कोई स्कैमस्टर को पकड़ नहीं रहे हैं ये लोग, किसी को पकड़ के डिस्प्ले भी नहीं हो रहा है कहीं पे, पीपल आर गेटिंग स्कैम्ड, और स्कैमस्टर लोग खुले घूम रहे हैं इंडिया में। इंडियन मतलब ऐसा चलता रहेगा तो 5 साल 6 साल में ना, मतलब इंडिया विल बी लाइक ग्लोबली, वो नाइजेरिया का बाप बनेगा बेसिकली। इंडियन स्कैम, वी विल बी फेमस एज द वर्स्ट स्कैमस्टर कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या करें, so many things. I will just go through some of these questions. Yeah. करेक्ट। और यहाँ पे एक चीज और अभी न्यूज में आई है, हैदराबाद में जो फ्रीबीज कांग्रेस ने दिया हुआ है उसकी वजह से एलएनटी इज फाइलिंग अ केस कि आपके ये फ्री बस टिकट की वजह से मेट्रो में लोग ट्रेवल कम कर रहे हैं, उससे मेट्रो को घाटा हो रहा है। तो उस पे जो यहाँ का सीएम है कांग्रेस का, वो कहता है फ्री बस टिकट तो मैं चलाऊंगा, तुम्हें अगर मेट्रो छोड़ के जानी है तो तुम जा सकते हो। तो इस तरीके का मतलब फ्री बी का कल्चर जो बनाया जा रहा है, जो चीजें हैं। आप इसमें एक छोटा चीज सोचो, मतलब ये मैं वंडर करता हूँ, क्योंकि दिल्ली में शीला दीक्षित के टाइम पे लेडीज की कंपार्टमेंट लगा के मर्दों को पीटा गया। ओके, सी इफ यू सी जो दिल्ली मेट्रो में या बैंगलोर मेट्रो में जो लेडीज कंपार्टमेंट है, उसकी कोई पार्टीशन नहीं है। मेट्रो में पार्टीशन नहीं हो सकता, राइट? So it is a continuous thing. Metro में you can walk from one bogie to another bogie. So it may have happened that the bogie is very crowded. अब लेडीज का बोगी में खाली जगह है तो कुछ आदमी घुस गए, या किसी ने फोर्स किया। जैसे आप समझो वहीं पे खड़े हो, कोई दूसरा बंदा बोलेगा पागल है क्या, उधर खाली है, चले जाना, कुछ नहीं होगा औरतों को, तो आप चले गए। ऐसा 10-15 लड़के उधर चले गए। ओके, अब बिना कोई फाइन के, अरे भाई 5,000 रुपया फाइन लगा देते, 2,000 रुपया फाइन लगा देते, कोई फाइन कुछ नहीं किए ये शीला दीक्षित का जो गवर्नमेंट था कांग्रेस का।
ये पूरा अंदर में वो ट्रेन रोक करके फिर वो लड़कों को पीटा, पीटा, फिजिकली वायलेंस किया। वीडियो है अभी। और उसके ऊपर में उठक बैठक करवाया, ऑल दोस थिंग्स दे डिड। नाउ what the nonsense is this, right? This entire nonsense there, which is complete violation of fundamental rights. You can't beat up people, right? तो ऐसे सब जो नौटंकी है, बट हियर इज द इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाई द यंग पीपल आर नॉट प्रोटेस्टिंग? देयर आर पुअर मैन, जो गरीब आदमी है उसको भी तो फ्री बस ट्रैवल चाहिए, या बस टिकट, उसका भी तो भाई आधा टिकट कर दो उसको, गरीब है उसको, राइट? सो उनको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। सो हमें उन लोगों को, वो बंदों को एनेबल करना पड़ेगा, भाई तू कारपेंटर है, तू मजदूरी करता है, तू बस में जा रहा है और तू बस में 50 रुपया दे के जा रहा है। देखो, अर्बन पुअर इज ए रियल प्रॉब्लम। जो शहर की जो गरीब होता है उसके लिए जीना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सिटीज आर कॉस्टली, एक्सपेंसिव। तो कोई प्लम्बर है, कोई कारपेंटर है, कोई मतलब मजदूर है, वो जाके घर साफ करता है, कुछ भी करता है, उसके लिए तुम हाफ टिकट करो ना। अब उनको हमको यूनाइट करना पड़ेगा। करेक्ट। तो ये चीज तो सर आपने बहुत सही बोली कि जो मजदूर टाइप का आदमी है उसको वो चीजें नहीं मिलती हैं, और जबकि बात ये है कि इन चीजों में जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो उन्हें तो एसी वाले रूम्स में वुमेन एम्पावरमेंट चाहिए। इन इन फील्ड्स में तो कोई वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, और जो मजदूर है राइट। उसको जाना ही है इन सब कामों के लिए और अपनी फैमिली को मैनेज करना है। तो बहुत सारी जगह पे देखा गया है एक मजदूर आदमी दिन दहाड़ी करके जो थोड़ा बहुत पैसा भी कमाता है वो उसका इन सब ट्रैवलिंग में चला जाता है, और फ्री भी से लोग देते हैं, लेकिन इसकी वजह से ये टिकट मेल्स के लिए बढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं चार्जेस को ये कंपेंसेट करना चाहते हैं। तो जो भी ये पैसा लेकर आते हैं, मेरे को तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि इनके पास ये पैसा आता कहाँ से जो ये बांट रहे हैं? है तो ये हम लोगों का ही पैसा, जो टैक्स पे कर रहा है, एक उसका पैसा है, एक जो बंदा बाहर से कुछ सामान खरीद रहा है। आप एक साबुन भी लेने जाते हो तो उसपे भी एक जीएसटी लगता है, उसपे भी तो जो सरकार आपको काट के नहीं दे रही है। चाहे कोई मजदूर हो या कोई भी छोटा मोटा आदमी जो दुकान भी चला रहा है, उसको तो सुविधाएं नहीं है। तो ये सारी चीजें देखी गई हैं, और ये लोग जो शांत बैठ के सिर्फ कि कानून करेगा या फिर सरकार जो बनाई है वो करेगी, वो ऐसे नहीं करेगी अगर आप इन बातों को नहीं रखें। तो इस पे लोगों को बोलना चाहिए, और इन लोगों को सर सच में इकट्ठा करना पड़ेगा और इनको खुद से आना पड़ेगा। जैसे किसान आंदोलन हुआ था तो किसान सारे इकट्ठे हुए थे उस चीज के लिए, तब जाके पॉलिटिकल पार्टी ने जो नया कानून बना रहे थे तो उसको रोका था। तो इस चीजों को लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ले लेंगे। स्वप्निल ने हम्म, पूछा है, कैन वी आस्क मीडिया फॉर हेल्प, like create programs on raising awareness on misuse of laws? People don't have idea। देखिए, मीडिया जो है, हमें ये लगता है कि मीडिया जो है वो न्यूट्रल है। तो मीडिया कभी भी न्यूट्रल है नहीं। ओके, मीडिया पॉलिटिकल करेक्टनेस बनाता है। वो मीडिया ही फेक है, समझो। मीडिया अपना काम कर लेता ना लास्ट 15-20 साल से, तो एसआईएफ की कोई जरूरत नहीं थी, हमें एक्टिविज्म करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मीडिया इज टेलिंग द ट्रूथ। सी, मीडिया इज कंप्लीटली फेक। ओके, और इसमें ये लोग बैठ के वन साइडेड स्टैटिस्टिक्स, फेक स्टैटिस्टिक्स ये सब दिखाते हैं। जैसे क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन आर इंक्रीजिंग। भाई, मर्दों के ऊपर जो क्राइम हो रहा है वो दिखाओ। एटलीस्ट मर्दों के ऊपर औरत लोग जो क्राइम कर रहे हैं उसको भी तो दिखाओ ना। आपने तो, you have allowed the crimes against women to be reported, but you have not allowed crimes on men by women, not to be reported. They are not getting reported or categorized. So you are getting one-sided data. So everything is one-sided narrative. So the media is like a low-pass filter. That means it will, change will happen first, then the media will write about it. Okay, so media is never futuristic. Media will never, look into future, except things like climate change or baki jo nonsense hai. So media cannot see. We also thought, go to Barkha Dutt, Rajdeep Sardesai, they will write about. They will not write. None of these people will ever write. Neither media people nor YouTubers. See, recently YouTubers were talking about these issues.
some YouTubers, but they will, that's like a one time. They were not interested. See, a lot of this comes from inherent personal biases, societal biases. So forget, media will never eliminate, the anomalies and the biases in the society. Media is media's help in democracy. Building a strong democracy, media is today irrelevant. Whether in USA or India or Europe, media is mostly fake news or it is aligned to left wing mostly or right wing. See, in USA, media is completely 80-90% left wing. It is supporting Democrat Party. In India, media used to be left. Okay, majority media was left, everything, and then because of Modi, now there is a lot of right wing media also. Godi media बोलते हैं उसको. तो दोनों तरफ है, दोनों तरफ है. I will give you an example of what kind of brainwashing that they do. I used to read about saffronization of Indian universities. I used to read कि यूनिवर्सिटी saffron बन गए, बीजेपी वाला कलर बन गए. I was reading for many years. I'm like, oh, saffronization हो रहा है. Think a guy like me with my degrees, even I'm thinking saffronization हो रहा है. So much effective they are in brainwashing you. Then what happened? The JNU incident started happening. Okay. Then I'm like, these guys are doing Lal Salam already. So Lal Salam was always going on. तो why the hell you are talking about saffronization? आपने कभी लाल सलाम का बात किया ही नहीं है. So red salute is going on and your saffronization is going on. Both are going on, right? तो चुप बैठो ना. Why the hell you talk about saffronization and all when you are not talking about lal salam and all that nonsense? So media, don't count on media. Count on independent media. But even independent media, all these YouTubers and all, देखो बुद्धि की थोड़ी जरूरत है. Okay, people should know difference between aloo and bhalu. Aloo is potato, bhalu is beer. They should know the difference. Okay. Now the YouTubers, they don't understand that, what actually matters really, which gives the highest leverage. If the country has to become like China or bigger than China, like USA, India has to become USA. What is the major factor? Like judicial reform. Without judicial reform, this country can't progress. You can't have industries, you can't have economic growth, you can't build flyover. Somebody will file a case on you. Government is building a flyover, there is a case. Government is making a freeway or a bullet train, there is a case. Couple of cases filed. 10 years the cases are running. Progress is not possible. How many YouTubers have made videos about judicial reforms? How many YouTubers? I mean, they are they also want entertainment. मुजरा करना है, लटकना है, लटक मटक सब करना है उनको बैठ के. जुडिशियल रिफॉर्म का किसी ने बात किया? नहीं किया. दूसरे कंट्री में क्या होता है जुडिशरी में, इंडियन जुडिशरी में क्या होता है, किसी ने पूरा सीरीज बनाया क्या 10 यूट्यूब का? और भाई 5-5, 10-10, 20-20 लाख फॉलोअर लगा के बैठे हुए हैं यूट्यूब में, पैसा बना रहे हैं यूट्यूबर बन के, सीरियस टॉपिक भी बातें करते. अरे ध्रुव राठी कितनी बार जुडिशियल रिफॉर्म का बात किया बताओ? कितनी बार ध्रुव राठी पुलिस रिफॉर्म का बात किया बताओ? अबे ये सब भी वही कर रहे जो राजदीप सरदेसाई करता था या बरखा दत्त करती थी. तो मतलब ये सब माया है. बेसिकली people are fooling each other, they are fooling themselves, they are fooling their parents, they are fooling their children, and they are fooling everybody. मतलब इसो अंधेरी नगरी, चौपट राजा, तकेशर भाजी, तकेशर खाजा. यहाँ पे ऐसा ही है. सब हर एक माल 10 रुपया हो गया है. खाजा भी 10 रुपया और सोना भी 10 रुपया. ये ऐसे चल रहा है देश, भगवान भरोसे. सर तो पड़ी किसको है? आम पब्लिक तो सोई हुई है और वोट के लिए तो सभी लोग सिर्फ किसको वोट देना है, किसको वोट देना है. 400 पार बीजेपी तो कांग्रेस इसी पे है. किसी को इसकी फिक्र कहाँ कि जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. सब के सब चुप बैठ के अपना किनारे बैठ के हम लोग देखते रहते हैं और ना इस पे कोई सवाल उठाने वाला है, ना ही कोई जवाब देने वाला है. अनफॉर्चुनेटली हम लोग जिस जुडिशियल रिफॉर्म को ढूंढ रहे हैं वो विदाउट पब्लिक सपोर्ट, विदाउट आपका जो मीडिया है, विदाउट पॉलिटिकल पार्टी पॉसिबल नहीं है. तो जब सब लोग सामने आए कुछ असरदार हो सकता है.
बाकी हम लोग जितना भी चीखते चिल्लाते रहे, ये एक कान से गवर्नमेंट सुनेगी, दूसरे कान से निकाल देगी, और हम लोग वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। दैट्स इट सर। नहीं, वंडरफुल। नहीं, एक बात सोचिए आप, सिर्फ हमारे ऊपर केस नहीं, दुनिया में 2-3 करोड़ लोगों के ऊपर केस है। लोग डरते हैं कोर्ट जाने के लिए। सी फॉरगेट, अदरवाइज और भी केस होता। लोग डरते हैं कोर्ट कचहरी जाने के लिए, राइट? तो हमारे यहाँ पे जजमेंट साइटेशन, जो एक जज ने एक जजमेंट दे दिया हाई कोर्ट का, दूसरे हाई कोर्ट उसको फॉलो नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया, दूसरा सुप्रीम कोर्ट जज उसी जजमेंट को दूसरी बार फॉलो नहीं करेगा। बोलेगा तू मुझे कानून सिखा रहे हो क्या? इफ यू पॉइंट एट सच काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन जो इंडिया में चल रहा है, डेमोक्रेसी में चल रहा है। सी देखिए, हमारे पास एक ही चीज है, पावर ऑफ नैरेटिव। ये जो नैरेटिव बना रहे हैं ना, बीजेपी, कांग्रेस, ध्रुव राठी, तो हम भी तो नैरेटिव बना सकते हैं। हम भी बना के लोगों को बताएंगे भाई घर के पास में पॉट होल है, तो कितना रिस्क है कि आपको इंजर होना। हाँ, अभी देखो घर के आसपास, लोगों के घर के आसपास कुत्ते काट रहे हैं सबको। अरे बच्चे लोगों को, देर किलिंग, डॉग्स आर किलिंग पीपल। ओके, एंड ऐसा भी बहुत सारा इलाका है जहाँ पे कुत्ते जो है सारे रात में बहुत ही आवाज करते हैं, क्योंकि देर आर एनिमल शेल्टर्स। ठीक है, लोगों ने कुत्ते बहुत पाल लिया है, तो एनिमल शेल्टर्स है, तो फिर लोगों को नींद सोने का राइट नहीं है। So there are so many issues where we have to create narratives to engage the common people in a honest way. Okay, and then we'll see how it goes. And I'll tell you that people need much better discourse. हम political मतलब पार्टी बना रहे हैं, तो उसके साथ न्यूज़पेपर भी तो बनाएंगे। We will have a newspaper, or we will have a news channel also, to give do research and data driven stuff, जहाँ पे हम in fact we can be very creative there. So we have to allow more creativity, more innovative young people. उनको धीरे धीरे पार्ट टाइम, बाद में फुल टाइम, we have to get them on board, और लोगों को उनके हाथ में दे दो ना, हथियार दे दो, जो पावर दे दो, जो बोलते हैं ना, पेन इज माइटियर देन sword. So right now we have to say, rhetoric and narrative is mightier than a tank. See, pen is mightier than sword, then the narrative, or you bolte na, rhetoric is mightier than a tank or a air force. So that is the analogy. तो हम लोगों को rhetoric दे देंगे कैसे बनाना है, एंड हम यंग लोगों को नैरेटिव बनाने की ताकत दे देंगे। उसके बाद आप झेलोगे तो बहुत मजा आएगा। कैन वी फील्ड 100 MRAs? Actually, yeah, this is an interesting thing. Let me now answer this. Yes, we can field 100 MRA. I will tell you what is needed to field. Okay, in the same constituency. Okay, see, the point is, let me also now tell you details about how to fielding elections. In elections, देखो, assembly elections you can field. We can field men in the assembly elections. It is possible. So how do you field them, and what is needed? See, minimum we will need 1.5 lakh rupees, 150,000 rupees minimum, because you have to pay the deposit money, and you need banners, especially banners and pamphlets. So if it's an assembly election, you will require at least 30,000 pamphlets. Okay, 30,000 pamphlets are needed. Around 40-50 banners are needed, right? And you need to put some online ads. Okay, online ads. So if you see, you have to spend some 1 lakh rupees and all that. And if you are contesting in an assembly election in a city like Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Pune, Delhi, then you can campaign by walking around. It is possible to walk around all the streets in 15-20 days. So you need volunteers, good quality volunteers, not like some paid guy you are paying him 500 rupees to distribute pamphlets. No, that's not the image we want to have. So you need around 25-30 volunteers every day, 2 to 3 hours. They have to just go around to interact and give the flyers to houses and all that. That has to be done to start. Second is that the candidates need to have a online profile, Instagram or Facebook profile, which we will build over a period of 1 year, 2 years and all. We have to build a brand. See, देखो, बीजेपी, the brand is there, Modi brand is there, the Lotus brand is there, narrative का पूरा है.
Let's say you are an independent candidate, you are only getting 15 days to campaign. 15 days campaign, how many votes will you get? You will get maximum 1% votes. Okay, you will get 15 days campaign 1%. But if you are preparing your profile for like 2 years in Facebook or somewhere, you are talking about issues, you are also meeting people, around, and you are protesting or doing something, then people know you in that constituency. Then of course you can expect 5 to 10% kind of votes, because if you are really being involved and you have friends or you have activists who are loyally with you. Okay, so फिर हो जाएगा वो चीज. Now the same thing, like Bangalore has 28 assembly constituencies. So potentially 28 candidates can stand in Karnataka assembly election from Bangalore. Now you can cover that thing. Similarly, I was thinking about my childhood place, which is Raurkela. I was asking myself, can I stand in Raurkela, let's say assembly seat? And I found it is possible, क्योंकि वो शहर में, I can walk around. 15 दिन I can walk around and cover with 20-30 volunteers. And let's ask people, like, you have some credibility, like आप कोई prominent college से हो वो शहर में, या आपकी कोई बैकग्राउंड है, डिबेटर थे या टॉपर थे या कुछ थे, या आप उसी सिटी में कोई एडमिनिस्ट्रेटर थे या सिटी में कोई बिजनेसमैन थे. सो वी हैव टू leverage all that to to field a lot of assembly candidates. Okay, so that is how we can play the game. Okay, and if we are getting 5 to 10% votes, then the political parties have to give us men's rights, and we will be media cannot ignore us, because if it's like say Sappa, BSP, and see communist parties, CPI in Odisha or in Karnataka, Andhra, they field candidates. And do you know how many votes these communist party candidates get? 0.5%, 0.3%. That is what they get. 0.5, 0.3, you know how much it is, like 1,000 votes or maybe 500 votes they get. That's it. Okay, we can get more than CPIM in many states. Okay, so this is very much doable, and we will in fact launch a course called political science, practical political science course, 6 months course. So you will learn everything hands on, like how to take permissions, how to prepare income asset affidavit, how to fill up the election form, and we will do a mock exercise also. Like, let's say you didn't do things, the expenditure audits properly, we will send a show cause notice to you. हम पूरा उसका पूरा इंटीग्रिटी के साथ उसका पूरा करेंगे. मतलब एक पुलिस स्टेशन में आपने अप्लाई किया है टू फॉर ए प्रोटेस्ट और ए रैली, बट आपका एप्लीकेशन को जो एग्जामिनर है वो स्क्रूटिनाइज करेगा, बोलेगा नहीं नहीं, आई रिजेक्ट दिस एप्लीकेशन इज नॉट करेक्ट. सो लाइक ए मॉक कोर्ट जो होता है ना, म्यूट क्या बोलते हैं उसको, क्या कोर्ट बोलते हैं उसको, कोर्ट्स को, समीर, व्हाट इज द वर्ड फॉर दैट कोर्ट? क्या है, कौन सा कोर्ट बोलते हैं उसको? कॉलेज में होता है ना, लॉ कॉलेज में क्या कोर्ट बनाते हैं उसको? Students, law college students have a court, no? They practice it, right? That is a mock court only. Moot court. Mock court. Moot court. So same way we will have a mock election, pura campaign, press release. We'll do everything, but everything we'll do mock exercises. Really practical elections. By the way, in those elections we'll allow, for that political science course we'll allow women also. So women, if they pay 50,000 rupees, we will enroll all those housewives and all who want to contest elections. They can also take this training, because BJP, Congress, they want to give a lot of seats to women in the assemblies. They want to give 50%. Now, who is going to train them? We have to train them. We MRS are ready to train, but free में training नहीं होगा. Women have to pay. For men, we will have free training. If a man wants to be politician, we'll give him free training. But for a woman, she has to pay. हम उल्टा discrimination करेंगे. Right. Okay, Anil sir, we have a time limit also. Already 1 hour हो गए हैं, तो हम लोग थोड़ा. Any other points from the questions? Can you see any questions?
Do you see any questions or any points from the, ले लेंगे हम लोग from the Yeah, comments of the we can people? also introduce like a crash courses, Yes, education political platform crash बनाते हैं course इसका. and law का crash Yeah, course. correct. So there is a common question coming. Can we make our own media channel for men's right? See, okay, here is the plan. If you want a proper media channel, not this channel, but a proper media channel, then we are looking for a newsreader. And we want a gynocentrism. See, gynocentrism simping are going on big way. So instead of we abusing the Sims or we using bad words against Sims, let's cater to the Sims. So we are looking for a female newsreader. So if you know a female newsreader or a young female newsreader or a young female, influencer, tell her don't do matka, tumka, mujra and all. You become our newsreader and you wear semi-decent dresses. You don't have to wear completely decent. You can have semi-decent. You can be semi-sundar, semi-shushil, semi-decent. And you read our news weekly once. The week, this was kind of a thing. Men's rights this week, kind of a news. So 40 minutes ka news reading karenge, so we will give her salary. See, we are not anti-women. See, we are planning to give a woman job. So first we'll recruit two women, then we may consider men. Okay. This is mainly to cater to our Sims. Okay. So we are very much ready for a woman, female news reader. वो मंथली वीकली न्यूज पढ़ेगी, वो जो भी हुआ ट्विटर में पंगा हो गया, किसी ने कहाँ पे अंडरवेयर जला दिया, कहीं पे राहुल गांधी ने कहीं पे और कुछ बोल दिया, और दुनिया भर के न्यूज वो पढ़ेगी वहां पे. सीरियस न्यूज, फेक न्यूज, कोई आदमी ने सुसाइड कर लिया वो भी न्यूज, कोई आदमी ने कोई औरत को पीट पाट डाला, या कोई फीमेल पॉलिटिशियन की कुटाई हो गई, वो सब न्यूज सुनाएगी वहां पे बैठ के. Right. So so we are looking for that female. So आप भी help कर दो. You tell your female friends or female colleagues or female classmates, if they are free, if they can read news for 40 minutes, then we will have a free news channel. फिर क्या होगा ना, next day Monday morning you are driving to your work, you can play this news, 40 minutes news, you know about, and you go to office like that. So Right. that's the starting point for a media channel. Correct. Gynocentric नहीं होगा, men's rights, but we'll give a woman's reservation. Semi sundar, semi सुशील, semi decent कपड़े वाली. तो ना, we will give an empowerment. अगर किसी की बीवी भी चाहती है ना, तो we will give an empowerment. या भाई विराग वो भाई, किसी की बीवी जो empower कौन नहीं मेंटेनेंस होना मेंटेनेंस चाहता. फाइल की है, मेंटेनेंस फाइल किया है, तो वो उसको यहाँ पे हाँ, पैसा मिल गया, तो या सो दैट्स पॉसिबल. तो देखो या किसी तो के बीवी कोर्ट में ले ले इवेंट या फिर मैनेजर यहाँ है. पे ले ले. ज्यादा बेटर यही है, या तो कोर्ट में ले ले या फिर यहाँ से ले ले. तो या जुडिशरी सो को भी समथिंग बता लाइक सकते हैं दैट. कि किसी की देखिए बीवी यार, भोजपुरी इस तरीके का भी एक्ट्रेस है, इवेंट एम्पावरमेंट है मैनेजर. हमारे पास. या वी विल एम्पावर वुमेन आल्सो. सी, इस बार जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, हमने एम्पावर किया था ना, तो हम भी एम्पावरमेंट करेंगे ना थोड़ा थोड़ा. अभी देखो कोई बंदा क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल जा रहा है, तो 2 फीमेल बॉडीगार्ड उसको दे देंगे. हाँ, क्राइम वो अगेंस्ट जरूरी है. सेल के लिए 2 फीमेल बॉडीगार्ड उसके साथ जाएंगे, तो कोई बीवी अटैक कर देगी बंदे के ऊपर, कोर्ट के ऊपर. कोर्ट में बीवियां हस्बैंड के ऊपर अटैक करते हैं, सो दे अटैक द हस्बैंड इन द कोर्ट. So we give them, instead of male bodyguards, he will have female bodyguards. So female bodyguards will defend the man. Then the female will, obviously the wife will accuse that he will have affair with the bodyguards. तो जज का भी टाइम बच जाएगा, एविडेंस भी मिल जाएगा उसको कि देखो 2 तो गर्लफ्रेंड बना रखा है, बॉडीगार्ड बना के 2 गर्लफ्रेंड बनाया हुआ, एक नहीं 2 गर्लफ्रेंड, और वो उसके बॉडीगार्ड भी बने हुए हैं. This is a good सर idea. बॉर्डर पे जो Bodyguard. जवान हम लोग के तैनात होते हैं, वहाँ पे 60%
वुमेन को डाल दिया जाए, बेटर हो रहेगा, रिजर्वेशन कोटा से। नहीं करेंगे ना, वो सब करेंगे, वो सब On that, करेंगे। I am with Rahul Gandhi. That क्या 50% on border, I am with Rahul Gandhi. उसका चाइना के एक्सटेंशन बॉर्डर पे। कर देते। एक काम करते, जितने भी पॉलिटिशियन है ना सभी को 2-2 दिन के लिए बॉर्डर में तैनात कर दो एनोनिमसली। मतलब उसका पूरा बहुत फेस फेस सब चेंज हो जाएगा। राहुल गांधी का फेस के बदले तुम कोई मल्लू का फेस डाल दोगे, ओके, या कोई बंगाली बंदे का फेस का मास्क लगा के उसको बंदूक दे के 2 दिन घुमा देने का। ओके, करेक्ट ना? सी Correct. पाकिस्तानीज डोंट नो दैट गाइज राहुल गांधी, दे थिंक दैट ये कोई मल्लू है या कोई कोई बंगाली है, सोच लेंगे उसको। तो राहुल गांधी भी जाएगा, जितने भी पॉलिटिशियन बिलो 50 बिलो 60 है सबको भेज देंगे। राहुल गांधी अबव 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 50 है, तो बिलो 60 जितने भी पॉलिटिशियन है सबको 2-2 दिन के लिए बॉर्डर के साइड में ड्यूटी में भेज देंगे। लेकिन वहां पे तो सर ये लोग कैमरा लेके जाएंगे, जाने दो ना। बर्फ में खेलेंगे, मजे करेंगे। लेकिन बॉर्डर पे बंदूक लेके घूमना जरूरी है, थोड़ा वहां का हवा पानी मिलना इन या लोगों को जरूरी या देखो पॉलिटिशियंस का ना शूटिंग रेंज में, सो पॉलिटिशियंस को ये सब सिखाना है बेसिकली। है। So any other questions? We'll close in 2-3 minutes. या Next 1-2 questions, then we'll close. सर एक क्वेश्चन था कि हाउ विल वी गेट पीपल टू वोट अस? लॉलीपॉप क्या देंगे? See, I'll tell you one thing. लॉलीपॉप जो है, देखो हम लोग लास्ट टाइम इलेक्शन में जब कॉन्टेस्ट किए थे बैंगलोर में या दिल्ली में, हमने स्लम, वी डिडंट गो टू स्लम्स, जो पुअरेस्ट स्लम्स हम नहीं गए थे, क्योंकि एक तो है कि स्लम एरिया में ये लोग पैसा बांटते हैं, या नहीं तो गुंडागर्दी चलता है उनका वोट के लिए, अलग अलग कुछ कुछ चलता है, गुंडागर्दी चलता है, ब्राइबरी चलता है, या अदर थिंग। सो वी डिड नॉट गो। तो let us target those people who do not vote. बैंगलोर में 45% people do not vote. पुणे में भी ऐसा ही नंबर रहेगा, 40% do not vote. तो वो जो क्राउड है ना, जो न्यूट्रल क्राउड है ना, यू फोकस ऑन देम, जो 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 इलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, राइट? सी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, he got all those people who are not going to vote, you know, he got them charged up. ठीक है? सो हमें लोगों को पैसा देके, देखो पैसा देना है तो ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसा लेके अपने पॉलिटिकल पार्टीज वो बांट देंगे, वी कैन नेवर कॉम्पीट, बट वील टेक दोस 10-20% जो न्यूट्रल वोटर है, जो लोग वोट देने नहीं जाते हैं, नोटा का वोटर है, लेट्स फोकस ऑन दैट। देखो हमको जीतना जीतना नहीं है। देखो केजरीवाल की क्या गलती थी, या रादर अन्ना मूवमेंट में क्या गलती थी, इसको चीफ मिनिस्टर बनना, ठीक है, और ये जीत भी गया 65 सीट्स, 67 सीट्स। सो दैट इज द प्रॉब्लम। डोंट ट्राई टू विन, डोंट ट्राई टू मेक फॉर्म गवर्नमेंट। हर स्टेट में 10-20 अपना एमएलए रखो, एमएलए लोग कुछ नहीं है, असेंबली में जाके सिर्फ हल्ला करेगा, हल्ला करेगा, बैन होगा, सस्पेंड हो जाएगा, मार्शल ने उसको उठा लिया। अपने एमएलए जो है उनका जॉब है कि असेंबली में पिट के आना है, दैट इज देयर टारगेट। ठीक है, वो असेंबली में जाएंगे, वहां पे सिर्फ डे वन से ही उछल कूद जितनी भी नॉनसेंस करने करेंगे, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये फासिज्म है करके, यहाँ पे मेंस राइट्स कुछ है नहीं करके, और पीट पट के आएंगे। You know, somebody will hit them in the assembly. That is the target. Our goal is not to govern. Okay, and with our ideas, with our narrative, see, देखो आप जो करने नहीं जाओगे ना वो हो जाएगा। So people will know what we are up to. देखो केजरीवाल, when केजरीवाल came to politics, he had 5 points on his manifesto. One was women safety, one was judicial reform, one was police reform, and then there were 2 more topics: corruption elimination and all that, and there is one more topic. But he dumped those things. Today Kejriwal is not talking about judicial reform, police reform. और एक गंदा सा किताब स्वराज करके लिखा था, गंदा सा किताब 4 पेज से ज्यादा नहीं पढ़ सकते।
तो वो इश्यूज है ना, जुडिशियल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म है, उसी पे बैठो। और सीनियर सिटीजन हेल्थ केयर, प्रोएक्टिव हेल्थ केयर जो है लोगों के लिए, एफोर्डेबल हेल्थ केयर है, एंड देन चिल्ड्रंस इश्यूज, ये सब हम कवर कर लेंगे। एजुकेशन, सीनियर सिटीजन राइट्स, दैट्स इनफ। Yes, these points needs to be covered. So हम बाइंड अप करते हैं यहाँ पे. Okay. या So we या have to cover these points regarding the mental health, the psychological issues which any family is facing up. Even it's a children. For a children, first we go through a children, then we have a male members also in a family, and then the senior citizens which are going through all those things, and the facilities needs to be provided, that will come into a picture. So all these things will come up sooner or later, but for that we want our society to come forward to speak about it. And if you are seeking help, or if you want to connect us, then join us on our website saveindianfamily.org. Like and subscribe this channel to get to know about many other things, that how the things are going in the society, what are the politicians are doing, what is the police people are doing, what is the judiciary is doing. We are covering each and every topic slowly, and we are coming up with a media channel also, as you have posted that you want one men's rights media channel. We will come up with that, but for that we need your side effect to aware the society as much as you can. So keep sharing this video also, so that society will know about it, that what actually the politicians gives a lollipop, what are the things they have given to you for just voting for them, and at last what you are getting in a result. So you know about it, you should understand it and aware yourself with the reality. That is our main motto. That is what Save Indian Family Foundation is here, which talks about a family first. So take care of your family. Anil sir, last point if you want to share something. Yeah, I think these are the great points that we spoke about. And maybe human rights for all, not like fake human All. rights thing that is going on by the leftists. Similarly, promotion of science and technology, because if you are focusing on science and technology, then all these fake news, fake data, fake surveys, fake sociology, fake psychology, and all this nonsense will not happen. Okay. See, scientifically, there can be a strong democracy, which is based on science and facts and data. वो सब में भी बहुत सारा चीज हो सकता है, right? So that is what it is. So let's close, and thanks guys, thanks for joining. And please keep watching. We will have another session next week. Yeah, Yeah. Thank you you. guys. take care. Thank you, Anil Good sir. night. Thank you, guys. Good Thank you, night. Samir bhai. Thank you, Sasank ji, for joining with us into this discussion. And thank you to all the people who joined us to listen us. And keep on sharing this video. This will be available on YouTube. Like and subscribe this channel and leave your comments, your valuable comments, to aware the society and to aware the people whoever will going to watch this video later on. Thank you so much. Thank you. Thanks. Bye. Bye.